Very good morning, good afternoon, good evening everyone. Today we are going to discuss about Unit 2 B Form 5th semester, that is the shock treatment and what actually the shock. So shock is a emergency situations. So there are many types of shock. So first there are how many types of shocks are there? One is your hypovolemic shock. Hypovolemic. There is a cardiogenic. There is a distributive shock. Then there is a obstructive shock. Obstructive one. So this is mainly of these four types: hypovolemic, cardiogenic, distributive and obstructive one. So what is the difference between these three and what treatment actually we are giving? So one by one we are going to discuss. First one is hypovolemic shock. So first you have to understand in cardiovascular systems, right? Every one of you knows about cardiovascular systems. So capacity of your cardiovascular system is your 5 liters, right? And how much volume? Volume is also 5 liters, right? So this is capacity of your cardiovascular systems, 5 liters, and this is your volume, approximate volume, right? 5 liters. So when there is what actually the hypovolemic shock? The hypovolemic shock happens, when there is a decreased volume. So decreased when the volume of the blood is going to decrease, when there is any internal bleeding or external bleeding is happens due to many reasons. So whenever there is any bleeding, so what will happen? Your volume is going to decrease. Normal approximate volume is 5 liters. So when there is a bleeding, so your volume is going to decrease. It is below the 5 liters. So due to that one, it could result in a shock, that is a hypovolemic shock, right? So what is hypovolemic shock? In hypovolemic shock, due to injury can be internal injury can be external injury, and due to external and internal injury, your which one is going to reduce? Your capacity is 5 liters, so capacity will remain the same, but your volume is going to decrease. Volume is 5 liters, so your volume is going to decrease, and that can be decreased due to internal or external bleeding. That are one of the reasons. That is a hypovolemic. Cardiogenic shock, as its name indicate, its origin from cardiac. There is a pump failure. If this pump is failed, so that could result in a shock. That shock we call cardiogenic shock. Then there is a distributive shock. Distributive shock, again, as I said, there is a 5 liter is your volume, 5 liter is your capacity. So in this distributive shock, which one is going to increase? Your capacity is going to increase. So when pathologically your capacity of cardiovascular system is increased much more than 5 liters, so that could result in a shock. That shock we call distributive shock. So if someone asks you differentiate between hypovolemic shock and distributive shock, so how you will differentiate? You can differentiate. In hypovolemic shock, the volume is going to decrease, right? And in distributive shock, your capacity of cardiovascular system is going to significantly increase. And if it increase significantly, so your venous return will be decreased. Venous return will be if decrease, your cardiac output is going to decrease. You will unable to maintain your blood pressure as well, right? So that is your distributive shock. We will discuss in details what is distributive shock, what are the different shock in distributive shock, like your septic shock, your anaphylactic shock, your particular neurogenic shock. These are the example of your distributive shock. And obstructive shock, as its name indicate, due to obstructions, there is any obstructions in the cardiovascular system, that could also result in the shock. So one by one we are going to discuss. First one is your hypovolemic shock. So what is hypovolemic shock? What it happens? How body will try to compensate? And what treatment we have to give when patient is under hypovolemic shock? And again, as I said, shock is a emergency situations. You have to give the treatment to the patients as soon as possible, right? So
as I said, first one is your hypovolemic shock. Hypovolemic shock. So as I said, hypovolemic shock means when your blood volume is going to decrease. When your blood volume is going to decrease, this volume is 5 liters. So how this volume can decrease? This volume can be decreased due to bleeding. Bleeding can be internal bleeding, hemorrhage can be internal, hemorrhage can be external. For example, you come across road accident हुआ, रोड एक्सीडेंट से क्या हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुई, आपका ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट. ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, देन व्हाट विल हैपन, ब्लड वॉल्यूम इज डिक्रीज, योर विनस रिटर्न विल डिक्रीज, venous return will decrease, your cardiac output is going to decrease. And you know the basics, blood pressure is equal to what? Blood pressure is equal to cardiac output multiplied by TPR, total peripheral resistance. So if your cardiac output is going to decrease, your blood pressure is also going to decrease, right? And it will become, patients will become hypotensive, right? So our body has a compensatory mechanism, and we have discussed many times these compensatory mechanism. Whenever there is a cardiac output is decreased, so what will happen? Our body will sense it, baroreceptor will sense it, carotid sinus will sense it that our blood pressure is going down. So which it sends the signals to the brain, and in response to it, what the brain will do? Brain is going to activate one system, that is the sympathetic system. And if sympathetic system is activated, then your neurotransmitters like adrenaline, non-adrenaline is going to release, and these adrenaline, non-adrenaline is going to act on the heart, and on heart there is a beta 1 receptors everywhere, and these beta 1 receptor stimulations will increase the blood pressure, which is decrease. So how beta 1 receptor stimulations increase the blood pressures? One mechanism is beta 1 receptors when stimulated, which are present on SA node, that results in tachycardia, and cardiac output is equal to stroke volume multiplied by heart rate. So if your receptors, beta 1 receptor which is present in the SA node is stimulated by adrenaline and non-adrenaline, it results in tachycardia. Tachycardia means increase in heart rate. Increase in heart rate will increase the cardiac output. Increased cardiac output will maintain your blood pressure, which is down, right? And why it's down? Because there is a hypovolemic shock. That can be due to external bleeding or internal bleeding. So when there is a internal or external bleeding, your blood volume is decreased, your venous return decrease, your cardiac output decrease, it will be sensed by your body and send the signal to the brain. Brain in response to it will stimulate the sympathetic system release neurotransmitter adrenaline, non-adrenaline. These are non-selective in nature, it will act everywhere in the body, and on the heart there is a beta 1 receptors everywhere on the heart. So beta 1 receptor which is present on the SA node, if it is stimulated, it results in tachycardia, and tachycardia, increase in heart rate will increase the cardiac output, and cardiac output will maintain your blood pressure. That is one mechanism by which beta 1 receptor stimulations results in maintenance of your blood pressure, which is decreased. Another mechanism is beta 1 receptor is also present in the ventricles, right? And beta 1 receptor which is present in the ventricles, stimulations will result in increase in the contraction of the ventricles, and if your ventricles contract, then your cardiac output is going to increase, and if your cardiac output is going to increase, your blood pressure is going to maintain, which is decrease, right? So there are two different mechanisms, one is tachycardia, another one is beta 1 receptor which is present in the ventricle if it is stimulated. And if detailed molecular mechanism, a question is asked about, give the detailed mechanism how beta 1 stimulations results in the maintenance of blood pressures. So this beta 1 receptor belongs to GPCR, and GPCR is going to activate GS going to activate one enzyme, that is the adenyl cyclase. Adenyl cyclase is going to do the degradation of ATP into CMP. Increase in CMP will going to do the phosphorylations of calcium channel. Phosphorylation of calcium channel means there is a more influx of calcium inside the cells. More calcium is going to bind with the tropomycins and results in ventricle depolarizations or ventricle contractions. That is the mechanism, molecular mechanism.
So this is the one mechanism. Another mechanism by which your body will maintain the blood pressure is, because as I said, adrenaline and non-adrenaline is non-selective in nature. Non-selective means it will act on alpha as well as the beta receptors. So if it act on alpha receptors, particularly alpha 1 receptor, which are present on small blood vessels, it results in vasoconstrictions. So alpha 1 stimulations will result in vasoconstrictions, and vasoconstrictions is going to increase which part? TPR, total peripheral resistance is going to increase. If your total peripheral resistance is going to increase, your blood pressure is going to maintain, right? So this is the mechanism by which, one of the compensatory mechanism by which body will try to maintain your blood pressures, right? This is the one mechanism. When you have a hypovolemic shock, hypovolemic, as its name indicate, hypo means less, volemic means volume. So when your blood volume is going to decrease, that condition could result in the shock, right? As I said, रोड टाइप एक्सीडेंट हो गया, रोड साइड पे एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो उस ब्लीडिंग, क्योंकि आपका ब्लड लॉस काफ़ी हो गया, बॉडी उस टाइम ट्राई करेगी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का. अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिली, टाइम पे आपका फर्स्ट एड नहीं हुआ, then it could result in the refractive stage as well. So hypovolemic shock. So this is one of the compensatory mechanism by which body will try to maintain. Another compensatory mechanism is because cardiac output is decreased. So decreased cardiac output means your renal blood flow is also going to decrease. And many times we have discussed renal blood flow, if it's decreased, then it results in activations of one well-known system, that is the RAS. Many times we have discussed, right? Activations of RAS, renin, angiotensin, aldosterone system. So when your blood flow to the kidney is decreased, there is a release of one hormone, that is the renin. Renin will enter into the blood circulations, and in the blood there is a one protein, that is the angiotensinogen, and that angiotensinogen is converted into angiotensin 2 by the angiotensin converting enzymes, and angiotensin 2 has a receptor on the blood vessels, and when angiotensin 2 act on its blood vessels, on its receptors which are present on blood vessels, it result in vasoconstriction, and if there is a vasoconstriction, it will increase total peripheral resistance and the blood pressure will be maintained. That is the one mechanism. Another mechanism is angiotensin. If you remember, when we talk about antihypertensive drugs, we have discussed this part in detail. So angiotensin 2 is a powerful stimulator of your sympathetic systems. So this is another mechanism by which your RAS system is trying to maintain your blood pressures. So your angiotensin 2 is a stimulator of sympathetic system. It further stimulate the sympathetic systems, and stimulation of sympathetic systems, you know, these chemical will be released, and how these chemical will increase the blood pressures, right? This is another compensatory mechanism. Another compensatory mechanism is angiotensin 2 is also going to stimulate your adrenal cortex, and it going to release another hormone, that is the aldosterone, and aldosterone is going to act on the nephron, right, proximal convoluted tubules, and going to do the reabsorption of sodium and water, and going to adjust your blood volume, because this is a shock which happens due to decreased volume. So renin angiotensin system activations, particularly aldosterone, is going to do the reabsorption of more sodium and waters, and more reabsorption of sodium and water will increase the blood volume, and that is required because this is a hypovolemic shock. You want to increase the blood volume. So this is the stages where body is trying its best to maintain your blood pressures. आपको कोई चोट लगी, again it depends upon intensity of injury as well, then body's compensatory mechanism will try to maintain, right? So these kind of compensatory mechanism is going to start and try to maintain, but you know, everything has its own capacities, you know, so it will be good for a smaller period of time. For example, patient is in you are very far from the hospitals, आप बहुत दूर हो, अभी रास्ते में जा रहे हो, तो during that stages, whenever the time passes, your compensatory mechanism, this mechanism is going to fail over the time. अगर आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया हॉस्पिटल पहुंचने में, या आप ट्रैफिक में फंस गए, या कोई भी XYZ reasons, so during that phase, you know, slowly and slowly your compensatory mechanism is going to fail. Compensatory mechanism is unable to maintain your blood pressures, and as I said, how your compensatory mechanism is maintaining your blood pressures. If question someone asks how your compensatory mechanism is maintaining your blood pressure,
One mechanism is your activation of sympathetic system. Another is renal blood flow is going to decrease. Activation of renin-angiotensin-aldosterone system. Renin-angiotensin-aldosterone systems, angiotensin 2 is a powerful stimulator of sympathetic system. It's going to activate your adrenal cortex. Aldosterones will act on the kidney and going to reabsorb of more sodium and water. Another mechanism is angiotensin 2 has a receptors on the blood vessels, and when angiotensin 2 act on its receptor which are present on the blood vessel, it will result in vasoconstriction, and body will try to maintain its blood pressure, right? So now next you have to understand how this slowly compensatory mechanism is going to fail and what happen in that stage. So hypovolemic shock. So what happens slowly, because blood supply is less, and during the compensatory mechanism, your bodies like GITs, other organs will result in vasoconstrictions. It's under the influence of renin-angiotensin-aldosterone system. It's under the influence of sympathetic systems which constricts the blood vessels and maintaining your blood pressure, right? So they are sacrificing their blood for your vital organ. Vital organ is your cardiovascular, your heart, and your nervous systems, right? So all these tissues, vasoconstriction happens. These are constricting blood vessels and giving their blood to your vital organs. But again, slowly, they have a capacities because they are giving their blood. So what happens? Your ATP is, your blood supply is going to decrease, and if blood supply is decreased, so ATP production is going to decrease, right? And ATP is a storehouse of energy, and ATP is decreased, and because oxygen is also less, so your metabolic process is switching over from aerobic to anaerobic metabolism, right? So in anaerobic conditions, what will happen? Anaerobic conditions, what will happen? There is a production of lactic acids. So lactic acid is going to produce in the body, right? Slowly, your lactic acid is going to accumulate, and lactic acid is vasodilators, and lactic acid is also a myocardial depressors. So lactic acid is a vasodilators. Lactic acid is a vasodilator. So in compensatory mechanism, what body is trying to do? Body is trying to do the constrictions, vasoconstrictions, right? To maintain the blood pressures. Now you can see that now these lactic acid production is going to oppose your compensatory mechanism. अब आपके जो लैक्टिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस होने लग गया बॉडी में, और क्यों हो रहा है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ब्लड सप्लाई कम है. ब्लड सप्लाई क्यों कम है? क्योंकि आपने सारा ब्लड तो अपने हार्ट और नर्वस सिस्टम को दे दिया. आपके ऑर्गन्स के पास तो ब्लड कम रहा तो ऑक्सीजन कम रही तो आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ. लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ तो लैक्टिक एसिड क्या है? वैसोडाइलेटर है. और आपकी बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर रही थी? वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सके. अब यहाँ से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, लैक्टिक एसिड उसको डायलेट कर रहा है, ये कंस्ट्रिक्ट करने की ट्राई कर रहा है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, और लैक्टिक एसिड इसको अपोज करना शुरू कर दिया. सो नाउ योर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इज गोइंग टू फेल. अभी तक आप हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचे हो, अभी आप रास्ते में ही हो, तो धीरे धीरे अब आपका कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो लैक्टिक एसिड इज द वन ऑफ द मैकेनिज्म. देयर इज अनदर मॉलिक्यूल व्हिच इज रिलीज इज नाइट्रिक ऑक्साइड. यू ऑल नो नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो वन ऑफ द वैसोडाइलेटर्स, राइट? तो दीज आर दी अपोजिट इफेक्ट टू द कंपेंसेटरी मैकेनिज्म. अगेन मैं अगर आपको बताऊं, हाइपोवॉल्मिक शॉक में क्या हो रहा है? आपका ब्लड लॉस हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, कुछ भी हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम आपका डिक्रीज हुआ. ब्लड वॉल्यूम जैसे डिक्रीज करेगा आपका वीनस रिटर्न कम होगा, आपका कार्डिक आउटपुट कम होगी. कार्डिक आउटपुट कम होगी, वो बॉडी सेंस करेगी, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगा. कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी क्या करेगी? आपका सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी. दैट्स व्हाई सिंपैथेटिक सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, राइट? तो सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू आपके केमिकल रिलीज होंगे लाइक एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन. वो क्या करेंगे? हार्ट पे एक्ट करेंगे, जहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर हैं जो कि GPCR से बिलोंग करते हैं, GS को स्टिमुलेट करेंगे.
और पर्टिकुलरली अगर उन्होंने बीटा 1 रिसेप्टर जो आपके एसए नोड में है उनको अगर स्टिमुलेट किया तो टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपका बीपी कुछ हद तक मेंटेन हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म, बीटा 1 रिसेप्टर जो वेंट्रिकल में है वो स्टिमुलेट होंगे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी तो जो ब्लड प्रेशर आपका कम हुआ था ब्लड लॉस की वजह से वो आपको मेंटेन हो जाएगा। दिस द वन कंपनसेटरी मैकेनिज्म। अनदर जो आपको बताया कि जब आपका कार्डिक आउटपुट कम है तो रीनल सिस्टम को भी ब्लड कम जा रहा है, वो सेंस होगा तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम रेनिन है, रेनिन ब्लड में आएगा, ब्लड में एक आपकी प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर बनाता है, तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स पर्टिकुलर लंग्स में कन्वर्ट कर देंगे एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर आपके ब्लड वेसल पे हैं, एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल पे एक्ट करेगा और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। दिस इज वन। अनदर इज मैकेनिज्म इज एंजियोटेंसिन 2 इज ऑल्सो द स्टिमुलेटर ऑफ योर सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेटर है तो सेम मैकेनिज्म एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन वाला, राइट। तीसरा मैकेनिज्म, एंजियोटेंसिन 2 इज गोइंग टू स्टिमुलेट योर एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहाँ से आपका एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे लगा है, वहाँ पे रीएब्जॉर्ब करवाएगा सोडियम एंड वाटर, ज़्यादा सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और आपकी बॉडी को वही बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगा है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है तो बॉडी को ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, तो बॉडी ट्राई कर रही है एट इट बेस्ट कि किसी ना किसी तरह से मैं मेंटेन कर लूँ, पर एज ए सेड कि हर चीज़ की एक कैपेसिटी है। आप अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ पेशेंट्स का, अब क्या होगा धीरे धीरे यही कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है ये फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीआईटी ने अपना सारा ब्लड दे दिया, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, सारी जगह आपकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, सारा ब्लड आप हार्ट और ब्रेन को दे रहे हो, तो इनकी भी एक कैपेसिटी है। दे स्टार्ट इज अपोजिंग कि भाई हम कब तक सहन करें, कब तक हम अपना ब्लड देते रहें। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि इनकी ब्लड सप्लाई कम है तो इनकी एटीपी प्रोडक्शन भी कम है, ब्लड सप्लाई कम है तो ऑक्सीजन कम जा रही है, ऑक्सीजन कम जा रही है तो जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो आपका नॉर्मली ग्लूकोज से पायरूरिक एसिड और क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, अब क्या हो रहा है आपका प्रोडक्शन हो रहा है लैक्टिक एसिड का और एटीपी कम बनना शुरू हो रहे हैं। और लैक्टिक एसिड मैंने बताया, लैक्टिक एसिड इज वैसोडाइलेटर, वो अब क्या करेगा, लैक्टिक एसिड ब्लड वेसल को डायलेट करना शुरू कर देगा। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ट्राई कर रहा है कंस्ट्रिक्ट करने का, ये अब उसका उल्टा काम शुरू करने लग गए, ये उसको डायलेट करना शुरू कर गए, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा जो कि अगेन वैसोडाइलेटर है। लैक्टिक एसिड अपने आप में हार्ट पे एक्ट करेगा जो कि मायोकार्डियल डिप्रेसर है, मायोकार्डियम को डिप्रेस करेगा। तो जब ये और बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तो आपका कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेल होना शुरू हो जाएगा, राइट। अभी भी अगर आप पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे दोगे, पेशेंट्स कैन सर्वाइव, बट अभी भी आप पेशेंट्स को कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो धीरे धीरे पेशेंट्स विल एंटर इनटू द इरिवर्सिबल स्टेज, रिफ्रैक्टिव स्टेज, रिफ्रैक्टरी स्टेज, जो कि ट्रीटमेंट देने के बाद भी ठीक नहीं होगी, इरिवर्सिबल में चला जाएगा। तो वो कैसे जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एटीपी आपके कम हो रहे हैं। अब क्या होगा, एटीपी आपको पता है एवरी सेल्स हैव वन इंपॉर्टेंट पंप, दैट इज द सोडियम पोटासियम पंप, राइट। सोडियम, जिसमें आपके 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटासियम अंदर आते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है। विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटासियम ATPase, this ATPase is enzymes which will do the breakdown of ATP into ADP plus phosphate plus energy is released, that energy is utilized by this channel because this is an energy dependent process। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो प्राइमरी एक्टिव, इस पंप को चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों चाहिए एनर्जी? क्योंकि आपका सोडियम अंदर से बाहर जा रहा है, राइट, और पोटासियम आपका बाहर से अंदर आ रहा है, राइट। तो अब आपका ये पंप, अब दिस पंप इज एटीपी डिपेंडेंट, राइट। एज ए सेड व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको याद होगा, आउटसाइड द सेल सोडियम कंसंट्रेशन इज मोर, राइट। आउटसाइड द सेल सोडियम कंसंट्रेशन इज मोर एंड इनसाइड द सेल पोटासियम कंसंट्रेशन इज मोर। अब आप मूवमेंट देखिए, मूवमेंट कैसे हो रही है सोडियम की, अंदर से बाहर को, बाहर ऑलरेडी ज़्यादा है तो आप कहाँ को जा रहे हो, लोअर टू हाइयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो, अगर आप लोअर टू हायर की मूवमेंट आपको चाहिए तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दिस एटीपीज, राइट। नाउ अब क्या हो रहा है, अभी तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, धीरे धीरे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया, लैक्टिक एसिड ने वैसोडाइलेट करना शुरू कर दिया, एटीपी कम बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ब्लड कम जा रहा है, तो अब क्या होगा, ये पंप भी अफेक्ट हो जाएगा। दिस पंप इज गोइंग टू अफेक्ट बिकॉज दिस पंप इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी, दिस पंप नीड एनर्जी फॉर इट्स मूवमेंट। अब क्या होगा, ये अगर पंप फेल होना शुरू होगा तो सोडियम कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल इज गोइंग टू इंक्रीज, right, and potassium concentration is going to decrease. Is it a normal situations? No. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपके सेल्स के अंदर सोडियम कम होता है और पोटासियम ज़्यादा होता है, और वो क्यों होता है, ड्यू टू दिस पंप मूवमेंट, राइट। अब क्या होगा, जब ये पंप, इसको एनर्जी ही नहीं मिल रही है, एटीपी नहीं मिल रहा है, एटीपी नहीं मिल रहा है तो एनर्जी नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही तो ये पंप सही से काम नहीं कर रहा है, पंप अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो सोडियम बाहर नहीं जा रहा है और पोटासियम अंदर नहीं आ रहा है, सोडियम अगर बाहर नहीं जा रहा है तो सोडियम की अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जा रही है, और पोटासियम बाहर से अंदर नहीं आ रहा है तो पोटासियम कम हो गया, तो इससे अबनॉर्मल कंडीशंस, राइट। सो योर सोडियम पोटासियम पंप विच इज प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेल्स मेम्ब्रेन, इट्स गोइंग टू फेल। अभी तक आप ट्रीटमेंट नहीं दिए, राइट, तो अब आपके ये सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, पोटासियम कम हो जाएगा। अब inside the cells another organelle is also going to damage. There is a vesicle which stored enzymes like lysosomes. This vesicle is going to rupture and going to release these enzymes, and these enzymes which are stored inside the vesicle like lysosome, proteases, so these enzymes is going to release outside the vesicles and going to damage, right, cell organelle. Mitochondria is going to affected, right, mitochondria is going to damage slowly and slowly, right, which is storehouse of your cell, storehouse of your energy, right. Another which is most drastic change which can happen is your ATP is going to convert into ADP, and ADP is going to convert into AMP, and this AMP is going to convert into adenosine, and this adenosine, this where it's happening inside the cell, this adenosine is coming out of the cells, adenosine, and this adenosine will not enter again. तो अगर आपका ATP टूट गया ADP में, ADP से AMP बन गए, AMP से एडिनोसिन बन गया और एडिनोसिन आपके सेल्स के बाहर चला गया, तो अब वो रिटर्न नहीं आएगा, इट्स ए इरिवर्सिबल चेंज। अब भले ही आप जो मर्जी कर लो, आप रिवर्स नहीं कर सकते, राइट, जो डैमेज हो गया वो परमानेंट हो जाएगा। तो एडिनोसिन कम आउट ऑफ द सेल्स, एटीपी, क्योंकि एडीपी, एएमपी और एडिनोसिन बाहर चला गया, आपके सेल्स की ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी, राइट। सो व्हेन यू डू द नेक्रोसिस, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, यू विल फाइंड नेक्रोसिस एवरीवेयर, सारे ऑर्गन आपके डैमेज हो गए, राइट। सो दिस इज योर हाइपोवॉल्मिक शॉक। सो बट आई विल से मीन्स पेशेंट्स, हर कोई पेशेंट्स टाइम से पहुँचे, किसी को भी अगर इंजरी होती है, चाहे वो इंटरनल इंजरी हो रही है चाहे एक्सटर्नल हो रही है, इमीडिएटली वो हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल अगर बहुत दूर है तो फर्स्ट एड उसको टाइम से मिले, सो दैट दिस बॉडीज विल यू कैन सेव द लाइफ्स। So treatment, if we talk about treatment of hypovolemic shock, so treatment is, because it's an emergency situation, so you have to maintain blood pressures, right, pulse, heart rate, you have to maintain, first तो उसको maintain करिए, right। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो चुका है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, यू हैव टू गिव हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस की ऑस्मोटिक प्रेशर किसी ना किसी तरह से मेंटेन किया जाए। You are giving the vasopressor agents. Vasopressor agents are those agents which will vasopressors like your adrenaline, non-adrenaline, epinephrine, norepinephrine, dopamine. So these are the sympathetic. So sympathetic stimulations will result in vasoconstrictions, and you want to maintain the venous returns, you want to maintain the blood pressure, you want to maintain the cardiac output. So you can give the vasopressor agents. But again first you have to maintain फटाफट आप IV लगाओगे, फ्लूइड्स मेंटेन करोगे, all these procedures and vasopressor agents
to maintain its blood pressures, because if your blood pressure is not maintained, so there is a chances of death is more, right. So this is the your treatment of anaphylactic shock, where you have to maintain आप blood donate कर सकते हो, blood नहीं plasma जो भी whatever transfusions you can do it, you want to maintain the volume, and volume as I said 5 liters से कम हो रहा है, body is trying its best, but body has also the capacity to maintain, and then you have to give the immediately the treatment to the patients, and you can save the lives, right. So this is about your hypovolemic shock, right. So next video we will discuss about another shock. Thank you.